Students, today we are going to study about the Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is 12th chapter. To understand Faraday's law of electromagnetic induction, it is necessary to understand some basic definitions and concept. Faraday's law को समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट हमको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाय phi. Whenever electric lines of forces are cut in magnetic field, the flux of magnetic field changes. Due to magnetic line of forces or change in magnetic line of forces, the flux is produced. Therefore, magnetic flux, that is phi, is equal to magnetic field of area, that is phi is equal to B dot A, where phi is the magnetic flux, B is magnetic field of induction, A is the area. The SI unit of magnetic flux is Weber. This is the first concept. Faraday's law को समझने से पहले Faraday's laws of electromagnetic induction, ये लॉ समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट हमको समझना ज़रूरी था। तो फाई इज इक्वल टू यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। सेकंड कॉन्सेप्ट इज induced current. Induced current. What do you mean by induced current or induced EMF? EMF means electromotive force. When the magnet approaches near the coil consists of electric circuit and EMF induced in the coil. This EMF is called induced EMF, and current generated due to this EMF is called induced current. Let us see a bar magnet placed near the coil of an electric circuit. When the magnet approach near the coil, this is the coil, an EMF induced in this coil, which is denoted by small e. Due to this induced EMF, electric current generated in the coil. If the bar magnet away from the coil also EMF induced and current generated opposite direction, in opposite direction, this EMF is known as induced EMF, and current generated due to this EMF is known induced current. तो ये दो कॉन्सेप्ट, नंबर वन मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर टू इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, ये कॉन्सेप्ट हमने समझे। अब हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज phi, whenever there is change in magnetic flux in a closed circuit,
an induced EMF is produced in the circuit. Induced EMF means E produced in the circuit or produced in the coil. This is the first law. And Faraday's first law is qualitative law. Qualitative law. And second law is quantitative. ये हम दोनों लॉ समझने के बाद देखेंगे कि ये क्वालिटेटिव क्यों होता है, व्हाई इट इज क्वालिटेटिव. एंड सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव. अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है फैराडेज फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ एंड सेकंड लॉ इज क्वांटिटेटिव. सो द फर्स्ट लॉ इज whenever there is change in magnetic flux, induced EMF produced in the circuit. Second law, the magnitude of induced EMF. Magnitude of induced EMF E produced in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux. हमने स्टार्ट में देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय phi. Therefore rate of change of magnetic flux becomes d phi upon dt. That's why according to second law, EMF, induced EMF is directly proportional to d phi upon dt, that is rate of change of magnetic flux. Therefore E is equal to k dot d phi upon dt, where k is the constant, and for the same system of units E is equal to d phi upon dt, where k is equal to 1. For the same system of units E is equal to d phi upon dt, it is known as Faraday's law. Therefore Faraday's law consists of two laws. First law is characteristic of the EMF. Second law is indicate magnitude of EMF. That's why first law is known as qualitative law and second law is known as quantitative law. पहला कानून, पहला लॉ क्वालिटेटिव क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हमको इंडिकेट करता है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जबकि सेकंड लॉ हमको इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. इसलिए ये क्वांटिटेटिव होगा और फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द Faraday's law of electromagnetic induction. अब हम देखेंगे लेंस लॉ, जो कि मॉडिफिकेशन है Faraday's law का. Therefore Faraday's law is equal to d phi upon dt. Lenz law is the modification of Faraday's law. लेंस ने ये बताया कि इंड्यूस EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं. The direction of induced current or induced EMF in a circuit is such that it opposes the change of magnetic flux. That is, E is equal to minus d phi upon dt, where minus sign indicate that the induced EMF opposes the rate of change of magnetic flux. It opposes the rate of change of magnetic flux. तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं लेंस लॉ नथिंग बट Faraday's law. लेंस लॉ और Faraday's law सेम है, सिर्फ लेंस लॉ जो है तो मॉडिफिकेशन है, जो कि बताता है EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन. तो ये हो गया हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में का पहला टॉपिक, Faraday's law of electromagnetic
induction, where the unit of SI unit of EMF is volt, and the SI unit of change of magnetic flux is Weber per second. Unit of magnetic flux is Weber, unit of time is second. तो आज हमने समझा है फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों टॉपिक टेक्स्ट बुक में से आपको स्टडी कर आना है, जो कि आपको मिलेंगे 12 चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, थैंक यू।